Dear students, class 10th, Assalamu alaikum. Today our topic is Long Walk to Freedom. South Africa remained under the rule of British for a long time. After that, hero of South Africa Nelson Mandela fought against this and against discrimination on the basis of color, caste and creed. Lastly, he succeeded in his mission. इसी के इर्द गिर्द ये हमारा सबक घूमता है. Page number 30. Let us start our lesson. 10th May dawned bright and clear. 10 मई जब सुबह रोशन और साफ था. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं खुशगवार तौर पर दुनिया की अहम शख्सियात और लीडरों से घिरा हुआ था जो शुरुआती रस्म या इब्तिदाई तकरीब के मौके पर अपना एहतराम देने के लिए यहाँ साउथ अफ्रीका आए हैं. नेल्सन मंडेला बोलता है, The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. इस दिन जो रस्म इब्तिदा शुरू, इस दिन दुनिया के बड़े बड़े लीडर साहिबान यहाँ साउथ अफ्रीका के सरजमीन पर मौजूद थे. इस इजलास में हिस्सा लेने के लिए वो जो आए. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. यह तकरीब रेतीले पत्थरे बने हुए एक गोल घर में हुई जो प्रिटोरिया में मौजूद बरतानी मोर के बीच बनी एक जगह थी. For decades this had been the seat of white supremacy. दहाइयों तक ये जगह घोरों के कब्जे में थी. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये जो कई दहाइयों तक गोरे हुक्मरानों की हुकूमत की मरकज़ थी, अब ये जनूबी अफ्रीका की पहली जमहूरी रंग नस्ल से पाक सरकार के क़याम के लिए मुख्तलिफ रंगों और कौमों के धनक इजलास की जगह थी. यहाँ बहुत से लीडर साहिबान जमा हुए. आज न कोई भेदभाव न कोई रंग नस्ल. On the lovely autumn day I was accompanied by the daughter Zinani. इस पतझड़ के इस मौसमी खज़ां के इस प्यारे दिन मैं अपनी बेटी ज़नानी के साथ था, या मेरे साथ वो मेरी बेटी थी स्टेज पर. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. इस वक्त जो मिस्टर डी क्लर्क था उसने अपना हलफ लिया डिप्टी सदर की हैसियत से. देन थोबो एम्बिकी, उसके बाद एम्बिकी ने लिया. was sworn in as a first deputy president. पहला डिप्टी प्रेसिडेंट था वो. when it was my turn, जब मेरी बारी आई, मंडेला बोलता है, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी बारी आई मैंने हलफ लिया मैं अपने आईन को मानूंगा और इसको बरकरार रखूंगा और अपने आप को जमहूरियत और लोगों की भलाई के लिए वक़्फ़ करूंगा. I will sacrifice myself for the constitution and the development of my country, Mandela said to the assembled guests and the watching world. I said, जो वहाँ जमा थे assembled guests, दुनिया भर के मेहमान जो आए थे, वर्ल्ड लीडर्स जो उस तकरीब में मौजूद थे, उस मौके पर जो जमा थे, मैंने उनके आगे ये कहा, today all of us do by one our presence here confirm glory and hope to newborn liberty. आज हम सब यहाँ अपनी अपनी मौजूदगी से नई आज़ादी की उम्मीद, आन बान और एहतराम दे रहे हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster,
that lasted too long, جو بہت ایک غیر معمولی انسانی تباہی جو بہت زیادہ لمبے عرصے تک جاری رہی. ایک ایسے سماج کو جنم ضرور ہونا چاہیے جس پر پوری انسانیت فخر کر سکے. آج جو اس نے حلف لیا ساؤتھ افریقہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے، رنگ نسل بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے. وی who were outlaws، ہم جو ایک زمانے میں آؤٹ لاز تھے، مجرم کو ہم کو گردانا جاتا تھا. not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. آج ہم اپنی دنیا کی لیکن آج ہم اپنی ہی دھرتی پر دنیا کے ملکوں کی میزبانی کرنے کا نایاب حق حاصل ہو رہا ہے. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of the what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. ہم تمام ان لیڈروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو دوسرے ملکوں سے ہمارے اس ملک میں آئے ہیں اس محفل کو سجانے کے لیے. اور آج ہم امن انصاف امن اور انسانی وقار کی ایک سانجھی جیت رہے ہیں. ہم نے یہ جیت لیا. باقی انشاءاللہ کل. خدا حافظ.